all of you know, data science is one of the most, I think, sought uh, subject. In different parts of the world, you will find many jobs related to this field, and lot of students are trying to capture, say, insight into this, as well as trying to have some degree or certificate in this field. Our Center for Artificial Intelligence has also started Masters in Artificial Intelligence as well as BTech in Artificial Intelligence from 2020-21 and 2021-22. Right now, our first batch of BTech is in second year, and we are expecting the first batch of Masters to be completed by December 2022. So this is really a field in which there are a lot of prospectors, and people are making a lot of effort in this field. In our place in Department of Computer Engineering, also we organize many workshop and also some seminar on this topic, uh, data analytics, machine learning, big data analytics, all this data mining, uh, what we call data science. This is all about insights into the data that is being generated uh, in in huge amount. Today's world is data driven world, and what we are seeing a lot of data, but what we want information. Someone rightly said that we are drawing in the ocean of data, but we are thirsty of information. We want information. So for this, the techniques that are involving different fields, statistical techniques, machine learning techniques, data mining techniques, uh, artificial intelligence techniques, different parts, the computer science algorithms that are being used to get insight into data and try to have some information or knowledge from the use amount of data. So in this regard, today's webinar, I think, is one of the platform and one of the opportunity for the audiences to hear about from our say respected resource person and who has a lot of experience in this area. And I hope that this webinar will be useful for all the participants, and at least we will have some insight into this topic. And but what I would suggest all the audience, that we should not say have just this, hear this and then go. No, but what is required, that after having some introductory knowledge, after hearing this and attending this webinar, we should go and try to have some knowledge. A lot of information is also available. There are many courses available, short-time courses from many platforms, online courses. So if you want to get insight of the field, and if you want to excel in this field, and as a researcher or as a professor, if you want to have some work also in this area, we may have to go and attend some of these good sessions and maybe online lectures or online, say, courses. And after that, I hope that we can get some insight into this field. So I hope this webinar will be useful for all of you, and we will get a lot of benefit out of this. So thank you. With this, I think I can ask our, say, host to continue. Thank you. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you very much for your valuable suggestion for us about the artificial intelligence and data sciences. I would like to invite Professor Rashid Ali Saab. Please introduce our resource person, Mr. Aditya Nath. Sir, please proceed. Rashid Saab. Okay, fine. Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, am I audible?
Can you hear me? Yeah, Rasid, please go ahead. Okay. It's my Mr. Yes, Aditya, sir. Yes, sir. resource person of the session today, Dr. Rashid Ali, Artificial Intelligence Coordinator, AMU, Mr. Rafiq of Bharat Digital Academy. It's my privilege and pleasure to introduce Mr. Aditya Nath, and privilege why? Because he's my high school friend, and pleasure also because it gives me a lot of feeling of pride that I am going to share dice with him on such a very, very useful topic. Mr. Aditya had his schooling from Kendriya Vidyalaya, IOC, Baroni Refinery, and I used to share bench with him. We were class fellows. We have been sitting on the same bench since class 6th. And this is my big pleasure, pride, that I'm going to talk about him. Rather, I would thank Mr. Rafiq of Bharat Digital Academy to give this opportunity to me to share some moments with Aditya. When we talk about his profile, he is a very modest person. When I asked him that please send me his resume, he sent a 4-line resume about himself. And then I asked for a detailed resume. And but before I talk about his resume, I was doing a little bit of surfing on the net, and I found that in this computing and digital globe of data transfer, data information, data mining, and data management systems, somewhere 3.8 billion people are, more than 3.8 billion people are connected to the internet. And more than 8.06 billion people are connected to the mobile computing systems. By 2023 or 24, I think more than 40 billion people would be handling the huge data traffic. And the kind of volume, variety, and velocity and value with which data is being handled and managed is something very, very unique in our modern contemporary times. And we all are part of that data management system. Somewhere we are consumers, somewhere we deliver those things. And Aditya's CV or resume fits into this kind of system where he has over 30 years of experience, rich experience in the field of information, data management. And he has been working as a business intelligence architect. He is into the mentoring role. And he has a wide range of skill sets across industry verticals. He has worked for high-profile clients like American Express, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Pfizer Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Geico Insurance in USA, Singapore. He has worked there for PMO office, Gemini, Sony, Citi Bank, and United Tractors, UK, Tesco, and for International General Insurance in Jordan. In India,
Pernod Ricard, Ramco Systems, Star Health Insurance, and all that. His area of expertise is database skills, data modeling, and he has wide range of experience in data transformation and BI reporting tools. He has handled multiple roles as an information architect, as a technical manager, as a system analyst, as a developer, and he has been providing huge number of experience, variety of experience as a kind of a technical solutions to various business requirements. He has led a team of data management experts for different kind of deliverables for high quality documentation. He was associated with some very leading firms of the world: Microsoft, IBM, Oracle, Informatica, Dashboard, and so many things he has been doing with, and till today, until now, he has been inventing and doing something new. He has developed his own system. He has his own project system, and he is into a kind of uh, uh, a kind of an habit or knowledge making kind of a behavior where knowledge never ends and he keeps on exploring. So uh, he is an he might be a very important person for many, but to me he is very dear as my friend, and I think I will not waste much of your time because you want to listen to him. So over to Aditya for his session. Thanks, Rasid. Thanks for all your nice words. Thanks, Rafiq Bhai, Bharat Digital Academy, giving this platform to talk to people of coming from wide range of faculty and background. Thanks, Dr. Rashid Ali, for giving some insights what is going on in the industry. And okay, so let's just start. I'll share my screen, and then I will request everybody to please keep your microphone on mute. Sir, excuse me. Yeah. Aditya sir, your face is not looking full. Kindly change your camera direction, please. Okay. Anyway, I will share my screen. It's mostly will be showing Yes, deck yes. and talking, so the picture is not that important. So that is fine. Let's go. Okay. So I'll share my screen and then we'll take it from there. And thanks for joining, everybody. It is late Saturday night and Saturday evening rather, and will not take more time. We'll try to close this as per schedule, and we'll make sure you gain something out of this session.
and whatever. And then the corrective actions are taken. And this is what we have, this is being done in every company, even the smallest company they do. They take the data, and even small people who do the daily business, they compare, oh, last month my salary was this month my income was this, we went down or we went up. And they have some target that next month we should achieve some 10% more sales. So this is, in every business, this is done. So this is data analytics. Now that what we are talking about data science is something more to it. What is something more to it? Use the historical data, see the pattern, and then apply some algorithm. Now the science is come. What is the science? It is the science of statistics and mathematics. All the statistics, knowledge of statistics and mathematics, there are various regression, various algorithms that we apply on it, and then we can predict what can happen in the future, and so that company can take a proactive decision, not the reactive, to minimize the loss or to go in a different direction. So that is where we call it, it is called advanced data analytics. And there are many topics in advanced data analytics, and one of them is predictive analytics. There we predict. We have machine learning, we have artificial learning, we have deep learning. We will talk about all those things today very briefly. We'll give you some keywords. You can note it down, and then you can do your little bit of more research and figure out how it relates. So with that, now we are here. Okay, so data plus science. You are able to see my screen, right, Rashid? Yes, I can. Okay. So we are. Let me make it big. This is the one I was talking about. We will have today. We will talking mostly about the concepts. What are things we do in the data field, data domain, and then tomorrow we will bring in some use cases that, and then some of the tools that are used, and the various career opportunity in this field, and what is the technology trends that is going on in the market, so that you can prepare yourself, and then challenges that we have as an IT industry in India. We are the leading in terms of providing quality resources, and so this is something that together, as in terms from academia and from industry, everybody needs to think about how to bridge this gap. So what all it takes to become a good person who can do predictive analytics. Let's say predict future, what will happen. First thing, you should have a good domain knowledge. Suppose you want to predict, I take an example of employee attrition. This is a very, very current trending for HR. Retention, employee retention. They are not able to retain employee. Is there a way to figure out this employee will be resigning in near future, near to 2-3 months, so that they can start planning before, and they don't come into a mess. So they should know all this HR, domain of HR, how this hiring process does, what are the various factors that goes into employee psychology, mind while they are working, what is the industry trend going on in terms of
in terms of technology in which their employees working, in terms of compensation in which your employees working, and what are the challenges your employees facing inside the organization. So you should not have a domain knowledge, good domain knowledge, and then you should get a collection. You should have enough data. It's not one month of 2 month of data, 1 year of data. That will not give good insight. You should have at least 3 years, 5 years, 10 years. More the data, better is your insight. And then you clean the data sanitization. You may have data, some of the data may be good, may be bad. So figure out which are the good data. If there is some data cleansing required, cleanse the data so that you are doing analysis on top of a good quality data. And then build a statistical model. There are a lot of statistical model, linear regression, decision tree, then figure out random forest, figure out which particular model, regression model will be useful for your case. Then using some set of the data, you already have the data, and you picked up a model and you wrote some algorithm, and from the data you figured out certain variables and you know what you want to predict. I want to predict whether an employee can resign. That is my problem statement. And what are parameters are there that can affect this result? Employee location, employee salary, employee age, employee domain, employee work-life balance, employee whether it is a male or female, whether employee travel, how frequently he is given traveling opportunity, or all those things may be a factor that will be going into employee's mind that this job is not a good job for me, and look for a change. So find those variables, and then from the big data, whatever data you have, pick those data set, a smaller portion of the data with those variables, and then separate those data set into two parts. One is the data. You take the data and train your model. You run the data, you run your model on this data, training data, and you provide the model what is the output. So you have the historical data, these are the attributes, and these are the employee they left because of this reason. And then your model knows the output, knows the result. Yeah, this employee resigned and this employee didn't resign. He knows the output and he knows the input. So what it will do, the model will assign certain correlation between all the variables that you have selected. You have selected 5 variables, 10 variables. So what these variables, it is not directly, everything is not directly proportional. There will be some weightage for something, some weightage for something. This model will try to adjust this weightage to all the variables and try to bring all the results same as it may not be always, but it will try. And this is how your model is being trained by a data set, where historical data set, where you know the input, you know the output, and you are feeding the input, and the model also knows the output, and model is adjusting its parameter weightage so that I match the output. Now you have trained the model. Now you will test the model. Now in the test, what you will do, you will give the input to now the model. Your model is trained. You give the input and you don't give the output. Now the model knows in this input, this particular input, if I use the whatever percentage the model has learned from the data, apply, and will give you some output. And then you match with the actual output and see what is the variation. If it is variation is, we are still predicting. It will be never accurate. We are predicting, but we should be close. So if it is way off, then we will go again back to the model
and then we missed something variable. We have taken unnecessarily variables. We some of the data set that we took was an outlier, something like corona effect, something natural disaster happened, something recession happened. So remove those outliers, because that will, if you take those outliers, then the model doesn't understand the outlier. It will try to balance everything. So remove those outliers data, and then see if your variables, you miss some variables, you took an unnecessary variable, that model got confused, or you are taking some correlated variable. Both you are taking date of birth and age, both are the same thing, but model will not understand. Model will try to put some number in, some percentage into both of them. So, but age is always, you can derive it from the date of birth. So remove the age. So all those things you keep doing. It is a recursive process till you gain some kind of output in a range that is acceptable. Yeah, I'm now, my numbers are matching within 10% variance. Yeah, so the model is good enough. Let's run the model, and in the real time scenario, current list of employee, and then figure out what the model is saying. Model is saying this, probably this set of people may resign, and then HR contact, and then it doesn't end there. We keep on improving model. With the new set of data is coming, and keep on changing the algorithm, keep on changing the parameters, and this keeps on going. So this is how the life cycle or the data science, the crust of the data science is this. So if you see the 3 domain here, it is computer science, IT. Very little to do with computer science, IT in data science. Most of the things that is required is from statistics and math. And then the next important thing is your knowledge of on the problem which you are working on. If you don't have enough knowledge, you may not be able to decide the correct variables, correct training data, correct testing data, and then you end up with giving wrong forecast, wrong prediction. So these are various steps we talked about. Now, while we are doing this session, these are the keywords you will be coming across, and with these keywords, these are the possible opportunities. People are working in these fields. We'll briefly come to all this. Sir, your face is not showing completely, sir. थोड़ा कैमरे का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए सर, प्लीज. हाँ, या, यस सर, यस, गुड सर, वेरी गुड. सर इसमें थोड़ा सा हिंदी का भी थोड़ा सा, ऐसे लोग हैं जो they cannot understand the English completely, so please use Hindi also, no? Sure. हाँ, हम हिंदी भी यूज करेंगे. So हमारे पास 3 डिफरेंट डायमेंशन है, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पीछे डेटा स्टोर होता है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. उसमें एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है. नाउ एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड. तो सडनली a huge volume of, there is a gap. If everybody wants a cloud architect, everybody wants a cloud engineer, and लोग हैं नहीं उतने ट्रेड. These are all corona effects. And सडनली लोगों को पता चला कि इंडस्ट्रियल घर बैठे काम हो रहा था. हम झूठ मूठ का ऑफिस का खर्च दे रहे थे, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे थे, हम झूठ मूठ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाए हुए थे, हम इन प्रीमाइस इतने बॉक्स, इतने सर्वर, इतने आईटी के लोग रखे हुए थे. इसकी क्या जरूरत है, सारा क्लाउड में मूव करो. अब सब तेजी से क्लाउड में मूव कर रहे हैं. एंड दिस इज अ बिग डोमेन. यहाँ पे बहुत बड़ा अभी लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, उसके बाद AWS है, अमेजॉन का, गूगल इज
इन्वेस्टिंग बिग मनी इन दैट, दे ट्राइंग टू कम्पीट वेरी क्लोज। अभी गूगल भी आ रहा है, ऑरेकल ने अभी बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है और वो लोग बहुत सारा पैसा क्लाउड पे लगाने जा रहे हैं। तो ये एक बिग और छोटे प्लेयर्स भी हैं, एचपी वगैरह भी हैं। देन वी हैव डेटा साइड। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे लाना है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं लाएंगे तब तक हम उसके ऊपर साइंस कैसे लगाएंगे। तो वो डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, उसके बाद हम डेटा को एनालिसिस करना है, वहाँ पे एक डेटा एनालिस्ट आएगा और डेटा साइंटिस्ट आएगा। तो 3 डोमेन में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जो कीवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं ये सारे आपको अभी हम लोग नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। डेटा क्या होता है, डॉक्टर साहब ने बताया था आपको। डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल क्या होता है, डेटा सोर्स, डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, क्लिंजिंग, डेटा मॉडल, डेटा वेयरहाउस, एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बताया था। एनालिटिकल रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, विजुअल एनालिटिक्स, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, क्लाउड, डेवऑप्स, बिग डेटा, डेटा लेक, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, और ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आप क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, आप डेवलपर बन सकते हो बहुत सारे। उसके बाद आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। आई विल गो बैक टू द, ये सम ऑफ द टूल्स हैं। दिस इज जस्ट 5% ऑफ द टूल, देयर आर टन्स ऑफ टूल्स इन द मार्केट, और सब एवरीबॉडी हैज दिस मार्केट शेयर। इंडस्ट्री में यूज हो रहा है सारा टूल, और ये डेली नए टूल्स आते रहते हैं। दैट इज द चैलेंज ऑफ द आईटी। आपको अप टू डेट रखना है। जो चीज आज सीखा हो सकता है, जो टूल, नॉट द कॉन्सेप्ट, टूल आज सीखा है हो सकता है कल वो टूल ऑब्सोल्यूट हो जाए, और रहे भी तो आपको किसी और प्रोजेक्ट में काम करने को बोले जो किसी और टूल में है, तो आपको ऑन द जॉब सीखना पड़ेगा। इसलिए टूल देख के घबराना नहीं। टूल्स आर देयर टू हेल्प अस। ये टूल्स, पहले हम लोग, ये टूल नहीं होता था, हम लोग कोडिंग करते थे, सी में लिखते थे, पास्कल में लिखते थे, जावा में लिखते थे। अब टूल आ गया है तो ग्राफिकल हो गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। तो इससे डरना नहीं है, ये हमारे हेल्प के लिए है। और टूल के पीछे भागना नहीं है, कोई अंत नहीं है। जैसे आप मोबाइल आज ये खरीदे, कल नया आ गया, कितना मोबाइल फेंक चेंज करोगे, कहां तक जाओगे? टूल के पीछे भी भागना नहीं। 1-2 टूल सीख लिया बस, दैट्स एनफ। कॉन्सेप्ट समझो कि टूल के पीछे जो काम हम लोग लॉजिक लिखते हैं, कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी जैसे जैसे आपको टूल आते जाएंगे मार्केट, ऑन द जॉब सीख लोगे आप। 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह लगता है नए टूल सीखने में। अगर आपसे उसी फील्ड का दूसरा टूल पे आपने काम किया हुआ है तो नए टूल पे आपको 1 वीक से ज्यादा नहीं लगेगा, आप खुद ही सीख लोगे अपने आप। उसके बाद एक टिपिकल, पहले हमारा डेटा कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो समझना है। एक टिपिकल ये एग्जाम्पल है जिसमें एक मूवी का सिस्टम है, जिसमें हम लोग यूजर वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू आता है और इंक्वायरी करता है टिकट है या नहीं। कहीं पे डेटा रहता है, वो बताता है कि नहीं टिकट अवेलेबल है, ठीक है, या बोलेगा टिकट है, सीट अवेलेबल है, तो फिर ये बुक करेगा। ये जो डेटा जहाँ रहता है उसको डेटा बस बोलते हैं। ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां से हमें काम के डेटा निकल सकता है, बट ये वनली नहीं है, बहुत सारे हैं। अब बोलो हम धीरे धीरे इस पे आएंगे। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमारा डेटाबेस है जहां से हम डेटा ले सकते हैं। तो हमने डेटा के बारे में, जहाँ इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल डेटा जब एक जगह रहता है वो इंफॉर्मेशन, जब डेटा इधर उधर पड़ा रहता है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब उसको मीनिंगफुल डेटा को एक जगह रख दोगे तो वो आपको समझ में आने लगेगा। डेटाबेस है कि जहाँ सारे इंफॉर्मेशन को एक
प्रॉपर तरह से अरेंज करके रख दिया जाए तो डेटाबेस बन जाता है। और ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अभी नया नहीं है, ये पुराना है, गोज डाउन टू 1970s। आरडीबी में रिलेशनल डेटाबेस, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो तो एक पेपर होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आज भी चल रहा है। और 90% ऑफ द सोर्स सिस्टम आज की तारीख में भी इंडस्ट्री में अपने डेटा आरडीबीएमएस में रखते हैं। तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किस कॉन्सेप्ट पे होता है? इसके अंदर एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट होता है, एंटिटीज के आपस में रिलेशन होते हैं, उसको मॉडलिंग करते हैं। कौन कौन से आरडीबीएमएस मार्केट में है जो पॉपुलर हैं? माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर है, ओरेकल है, आईबीएम का DB2 है, ये ओपन सोर्स है माई सिक्वल। एक और ओपन सोर्स है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। एक सैप का डेटाबेस है साइबेस। ये टेराडेटा अपनी आप में एक कंपनी है। नेटिजा एक आईबीएम का एक और डेटाबेस है। और ये जो डेटा आरडीबीएमएस होता है एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वो उसको बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, लैंग्वेज आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट से, तो आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकते हो। आपको पीछे भागने की नहीं जरूरत है मुझे सिक्वल भी सर, या आपको माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल आता है तो आप 2 दिन के अंदर आप ओरेकल पे काम कर सकते हो। तो अब हमारे पास हमारे पास डेटा आ गया, ये जहां हमने रिलेशनल डेटाबेस था, जहां हमने स्टोर। सर एक्सक्यूज मी, योर फेस इज नॉट इन फ्रेम सर। ओके सॉरी। अब हमारे पास और कहां डेटा है? यस सर, यस, गुड गुड। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा जो है कि ठीक है, जो डेटा का एप्लीकेशन पोर्टल ढंग से बना हुआ था वो तो हमने हमारे डेटाबेस में मिल गया। और बाकी और भी कंपनी में डेटा है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उतने प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो भी काम के हैं, उससे भी हमें काम के इंफॉर्मेशन निकालना है। उसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। बहुत सारा डेटा कंपनी में एक्सेल में पड़ा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पड़ा होता है। बहुत सारा एप्लीकेशन है आज जो कि डेटा रिलेशनल डेटाबेस में नहीं रखता है, XML फाइल में रखता है। उसको एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि आपका HTML होता है, वहां से भी डेटा हम रीड कर सकते हैं। आज के तारीख में एक नया फॉर्मेट आया है जिसमें डेटा लोग रखने लगे हैं, उसको जेसन बोलते हैं। वहां से भी हमें डेटा मिल सकता है। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ डेटा बाहर से आता है ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक से आता है, हम बैंक को भेजते हैं, वेंडर भेजता है। बहुत सारे फॉर्मेट में सबके अपने अपने एप्लीकेशन है, वहां से डेटा जनरेट होता है और वो लोग भेजते हैं। कुछ CSV में भेजते हैं, कॉमा सेपरेटेड, कोई भी डेलीमीटर, 2 कॉलम के बीच में कोई एक डेलीमीटर होना चाहिए जिससे पता चल जाए सेपरेटर कि दोनों कॉलम को किस चीज को सेपरेट कर रहा है। कॉमा से सेपरेट कर रहा है तो CSV बोल देंगे, कॉमा सेपरेटेड फाइल। उसी तरह कभी कभी पाइप एक कैरेक्टर है कंप्यूटर, उसमें आपके कीबोर्ड में मिलेगा, पाइप से सेपरेटेड हो सकता है, टैब से सेपरेटेड हो सकता है। तो वो सेपरेटर से को आप रीड करके उससे आप अलग अलग फील्ड के वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसको हम सेमी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी फिर भी आसान है रीड करना, ये एक बहुत आसान है, इसको आप रीड करके फिर सेमी स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर में बना के रख सकते हो ताकि आपकी आगे का प्रोसेसिंग आसान हो जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कंपनी में, PDF फाइल्स पड़े हुए हैं, आपके ईमेल आते हैं, ईमेल में इतना इंफॉर्मेशन आता है, ईमेल के अंदर अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं ईमेल के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें डेटा पॉइंट्स होते हैं, रेलिवेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं। सेंसर, आज हम लोग जितना RFID चलता है, सेंसर डेटा रिलीज करता है, उसका अपना अलग फॉर्मेट है। सोशल मीडिया, हम लोग इतना दिन रात हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, लोगों ने बोल रहे हैं, वो अलग एक डेटा रिलीज, एक डेटा हमें निकालता है। इतने सारे हमारे डिफरेंट और भी हैं, ये हमने कुछ बताया है ताकि आपको आइडिया लगे कहाँ से डेटा जनरेट होता है। ये सारे डेटा हमारे काम के हैं।
अब कैसे हमको इनको इनसे निकालना है, कौन हमारे काम का डेटा है और कैसे इसको निकालना है, स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है ताकि हमारा मॉडल इसको यूज कर सके। और यही सब सारा डेटा जमा हो जाता है बहुत ज्यादा, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं बिग डेटा। बिग डेटा में क्या है, 3 चीजें होती हैं। वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है डेटा का। वैरायटी है, कुछ आपका रिलेशनल डेटाबेस में पड़ा हुआ है, कुछ आपका सेमी स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, कुछ अनस्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। वेलोसिटी इतनी तेजी से आ रहा है, आपके सेंसर के डेटा है, हर एक सेकंड आ रहा है आपके मिलियंस ऑफ रोज। स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, उससे भी डेटा आप निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं, वहां कितना डेटा आ रहा है। इतना तेजी से जो वैरायटी ऑफ डेटा और वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए एक वी स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी बिग। इसको कैसे, बिग डेटा इज अ वर्ड, इसको कैसे स्टोर किया जाए ताकि इसको इफेक्टिवली फेच कर सके। स्टोर तो कर देंगे, लेकिन जब जरूरत हो तो वो हमें मिलना भी चाहिए और कम टाइम में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रिट्रीव किया और वो गोल गोल घूम रहा है और उसको आधा घंटा लग रहा है, देन इट इज नॉट वर्थ। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है, पीछे कैसे स्टोर किया जाए। तो फिर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो बिग रोल यहाँ प्ले करता है। हडूप वगैरह आएगा, HDFS आएगा, मैप रिड्यूस आएगा, कैसे क्लस्टर होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में काम करते हैं, आप पीछे आपका डेटा बढ़ रहा है, पीछे अपने आप एक के पीछे एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा कंप्यूटर वो जोड़ते जा रहा है क्लाउड पे। जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है अपने आप वो जोड़ते जा रहा है ऑन डिमांड। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अभी नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे। ये हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये यूजफुल है समझने के लिए कि फाइनली आपको डेटा रखना है इस तरह, आपका स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, लेकिन उठा के आपको इस मॉडल में लाना है, तभी आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप अनस्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट डेटा के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप सेमी स्ट्रक्चर्ड को भी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड रहेगा तो बहुत आसानी से आप SQL लिख के उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमको डिजाइन करते हैं, इसमें एंटिटी होता है, रिलेशन होता है, एंटिटी होता है। एंटिटी एक हर एक टेबल को एंटिटी बोलते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को एंटिटी बोलते हैं। जैसे ये मूवी का था, इतने सारे एंटिटीज बने हुए हैं, इस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट बने हुए हैं, और इन एट्रीब्यूट्स के आपस में क्या रिलेशन है। 1 to many है, कहीं 1 to 1 है, कहीं many to many है, तो ये आपस में रिलेटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं ER डायग्राम और ER मॉडल, और इसको डेटा मॉडल भी बोलते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक होता है कोई भी एप्लीकेशन बनाने का। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है सो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नींव डालते हैं और पिलर्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? बिना पिलर्स के घर क्यों नहीं बन सकते? क्यों 4 पिलर बनते हैं, कहीं कहीं 8 पिलर क्यों बनते हैं? कहीं पिलर में जो सरिया होता है कहीं बहुत मोटा यूज करते हैं, कहीं पतला, क्यों करते हैं? बिल्कुल वही चीज यहाँ आता है। इसलिए करते हैं कि आपका क्या प्लान है, आपका बिल्डिंग कितना ऊंचा जाएगा। आप 1 फ्लोर बनाना चाहते हैं, आप 3 फ्लोर बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, आपने पिलर सही जगह कम पिलर लगाए, कम सरिया, आप कल चाह के भी नहीं बना सकते इसके ऊपर। आपके पास पैसा है, आप नहीं बना सकते, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो वो सही सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका जो मॉडल होना चाहिए वो रोबस्ट होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़े उसको एकोमोडेट करता जाए। ऐसा नहीं कि ये तो बोल दिया नहीं, ये तो मॉडल हमने बनाया था, ये तो अब हमारा ये चेंज हो गया, इस बहुत ज्यादा डेटा आने लगा, ये बहुत वैरायटी ऑफ डेटा ये हैंडल नहीं करेगा, तो अब इसको पूरा स्क्रैप करो, एप्लीकेशन फिर से बनाओ। दैट इज नॉट ए गुड डिजाइन। तो वो सारा काम जो होता है वो डेटा मॉडलर, जो डेटा आर्किटेक्ट होता है, वो सारे काम करते हैं। शुरू में बहुत सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी पे होता है कि हमारा स्ट्रक्चर सही हो। स्ट्रक्चर सही होगा तो बिल्डिंग सही बनेगी। आप इंटीरियर चेंज कर सकते हो,
आज आपने पोर्टल, इसके ऊपर पोर्टल बनता है जिस पे आप डेटा एंट्री करते हो, आपको स्क्रीन पसंद नहीं आया, आप चेंज कर दो पोर्टल। आपका स्ट्रक्चर डेटा सेफ है, आप पोर्टल चेंज कर दो। आज आपने .NET में बनाया, नहीं आप नया टेक्नोलॉजी आ गया, PHP पे बनाते हैं, PHP पे बनाओ, जावा में बनाते हैं, जावा में बनाओ, चेंज कर दो। आपका स्ट्रक्चर नहीं हिल रहा है, आपका डेटा नहीं हिल रहा है, आपका केवल इंटीरियर बदल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। तो बहुत सारे डेटा मॉडल होते हैं, स्टेप्स होते हैं, हम सब कीवर्ड दे रहे हैं ताकि आप इनके ऊपर आप आगे पढ़ सकते हैं। सब अपने आप में एक टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं डेटा मॉडलिंग। उसके बाद हम डेटा डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी या आपके डेटा मॉडल का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह रहे, क्या एट्रीब्यूट है, क्या एंटिटी है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, कौन सा उसमें किस टाइप के डेटा एग्जाम्पल आ सकते हैं। वो सारा जब कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है तो उसको डेटा डिक्शनरी। तब एक बार रेडी हो गया, फिर आप जो है सो आप स्ट्रक्चर बन गया, फिर आप अपना बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह लगाइए इंटीरियर के लिए। अब हमने अभी एक बात करी एक एप्लीकेशन की, मूवी बुकिंग हो रहा था। अब किसी कंपनी में एक एप्लीकेशन नहीं होता, मल्टीपल एप्लीकेशन होता है। उसको आप आपस में टॉक करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए एक ऐसे लैंग्वेज में जो समझ सके। तो इसका हम लोग जब हमने एक एप्लीकेशन बनाया तो एक मॉडल बना लिया, इसका अलग मॉडल। अब हम जो है सो अब इतने सारे हैं, हम इनका डेटा का कहाँ कैसे एक जगह लाएं और उसके ऊपर, क्योंकि जब हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे तो हमें डेटा सब जगह से चाहिए, हम एक जगह से नहीं ले सकते। तब अब क्या करना है, अब यहाँ से रन टाइम में हम यहाँ से डेटा लाएं, यहाँ से डेटा लाएं मिलाएं, वो तो होगा नहीं। तब क्या करना, तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा वेयर हाउस, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, उसमें कुछ मास्टर्स होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। मास्टर डेटा क्या होता है, वैसा डेटा जो नहीं चेंज करता है या बहुत कम फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। जैसे कस्टमर है, आपने जो कस्टमर आ गए आपके पास, कस्टमर के सारे एट्रीब्यूट आपने नोट कर लिए, रेयरली वो चेंज करेगा, हो सकता है उसका एड्रेस बदल जाए, लेकिन वो हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या ना बदले। प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट के आपने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसका एक मास्टर बन गया। आपके प्राइस बदल सकते हैं, हो सकता है अगले महीने दूसरा प्राइस आएगा, लेकिन वो भी मास्टर है, उसके जो एट्रीब्यूट है बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन वैसे डेटा होते हैं जो कि डेली चेंज हो रहे हैं, डेली आ रहे हैं। जैसे बैंक में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, वो आपका एक ट्रांजेक्शन है। सेल्स में
आप डेली सेल्स का डेटा आ रहा है किस और ये क्या होता है, जो भी मास्टर रखे उसी को यूज करके ट्रांजैक्शन बनता है। किस किस सेल्स पर्सन ने किस प्रोडक्ट को किस कस्टमर को बेचा, किस दिन बेचा और कितने अमाउंट में बेचा, बस वो मास्टर यूज होता है। उसके साथ कुछ डेट्स आ जाते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती है, मेजर, उसको हम लोग मेजर बोलते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन और वो बढ़ता जाता है, एक दिन में 100 आएगा, 1000, जैसा आपका सिस्टम, आपका बिजनेस चल रहा है उतने ट्रांजैक्शन आएंगे आप। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं जब हम लोग कोई भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब मेरे पास इतना डेटा, अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, इवन दो दे आर स्ट्रक्चर्ड डेटा बट दे आर लाइंग सेपरेटली, they are disjoint, they are heterogeneous, they are not talking to each other. अब उनको आपस में बात कराना है, कैसे कराएंगे? तो सबको एक जगह लाओ और उस प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा वेयर हाउस बनाना, उसको डेटा वेयर हाउस डिजाइनिंग बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे इस साइड में ये सारे हमारे वेरियस सोर्स सिस्टम है, एक ERP है, एक फाइनेंशियल है, एक CRM है, और भी एक्सटर्नल डेटा कुछ हो सकता है, और यहाँ पे हमारा डेटा वेयर हाउस बनता है। और बीच में जो प्रॉब्लम, बीच में जितना एरिया है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा, यहाँ से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, फिर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि सारे एक लैंग्वेज में बात करें, और फिर जब हम इसको स्टोर करते हैं तब हमारा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। अब फिर यहाँ से जब मैनेजमेंट मांगेगा कि मेरा हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्विकली हम निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ सारा डेटा है, हमारे पास CRM का डेटा है, फाइनेंस का डेटा है, सारा है, हम डैशबोर्ड बना के उसको तुरंत दे सकते हैं। और मैनेजमेंट जो है उसको सारा कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको इंडिविजुअल एप्लीकेशन कोई ये दे देगा, ये दे, कौन उसको कंसोलिडेट करेगा और कौन उसको कितना करेक्टली कंसोलिडेट कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डेटा वेयर है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखा, और ये जो यहीं से हम स्टार्ट हो जाता है हमारा डेटा एनालिटिक्स, और इसको हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कि अब हमारे पास डेटा एक जगह आ गया और हमारे पास जमा हो रहा है, और डेटा वेयर हाउस में डेटा हम हटाते नहीं है, हम ट्रांजैक्शन सिस्टम में चूंकि परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, हम ज्यादा डेटा नहीं रखते, क्योंकि हमारा, आप बैंक का स्टेटमेंट देखने जाओगे ऑनलाइन तो आपका 1 साल पहले का बताएगा नहीं, 1 साल का पहले का आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आर्काइव कर दिया है, वहां से हटा के कहीं और रख दिया। क्योंकि अगर ज्यादा डेटा रहेगा तो परफॉर्मेंस ऑनलाइन सिस्टम का स्लो हो जाएगा। तो लेकिन वो सारा डेटा आपके वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, वहां से हटा आर्काइव करके वेयर हाउस में रहेगा। अब वेयर हाउस में आपका पूरा डेटा है, आप रखना चाहो 10 साल का, 15 साल का, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नीड है उसके हिसाब से आप रखो। अब आपको पूरा यहाँ डेटा है डेटा वेयर हाउस में, अब आप इसके ऊपर आप अपना एनालिटिक्स कर सकते हो। क्या एनालिटिक्स कर सकते हो? सिंपल मैथ का जो एनालिटिक्स है वो ये है कि हम सम एवरेज निकाल के, हमारा एवरेज सेल्स क्या था, हमारा टोटल इस महीने का सेल्स क्या था, पिछले महीने का क्या था, इसी महीने पिछले साल कितना था। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो टारगेट सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस ऐसे करते हैं, उनका बजटिंग होता है, हमने नेक्स्ट अगले साल इतने महीने में हम इस प्रोडक्ट इस मार्केट पे इतना पैसा और लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे सेल्स मार्केटिंग के लिए। तो आप अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो नया टारगेट भी सेट करेंगे कि हमारा इतना सेल्स होना चाहिए, और वो टारगेट वो नीचे तक जाता है, सेल्स इंडिविजुअल सेल्स पर्सन तक वो टारगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सबके पास नंबर्स होते हैं, इस महीने का ये टारगेट अचीव करना है। तो हमारा एक्चुअल वर्सेस टारगेट सिंपल मैथ है, सब्सट्रैक्शन करके हम देख लिए, उससे पता चल जाएगा नहीं हम टारगेट से बहुत पीछे हैं। वेरिएंस को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो ये सब जो चीज हम कर रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। सिंपल डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। अभी ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमने नहीं लाया है। कॉम्प्लेक्सिटी बस इतना है कि हमने डेटा को सही जगह जगह से जाके
रिक्वायर्ड डेटा को रीड करके, समझ करके, ट्रांसफॉर्म करके एक जगह रख दिया है। अब सारा मेरा, और क्लिंज भी किया है। अब यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस में मेरा जो डेटा है वो अच्छा क्वालिटी का है, इसके ऊपर मैनेजमेंट ट्रस्ट कर सकता है, इसके रिपोर्ट के ऊपर। अब इतना काम हमने कर दिया, और इससे जो हम सिंपल मैथ लगा के जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं, और मैनेजमेंट को डैशबोर्ड बन रहा है कि हमारा इस सेक्टर में लॉस हो रहा है, इस सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है, इस रीजन में इस सेल्समैन जो है बहुत अच्छा कर रहा है, ये सेल्समैन जो है सो अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो सारा रिपोर्ट मैनेजमेंट तक आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, सुबह सुबह निकल जाता है वेयर हाउस में। सुबह सुबह मैनेजमेंट के डेस्क पे यहाँ से एक डैशबोर्ड निकल के जाता है, उनके सीट पे होता है बिफोर दे कम टू ऑफिस, और वो सारे नंबर्स उनके दिखाई देते हैं। और फिर वो डेली अपना स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो वेट करेंगे पूरे क्वार्टर का, वेट नहीं करते। फिर इफेक्टिव अपना मेजर लेते हैं, क्या करना है हमें, वहां से किसको हटाना है, किसको लाना है वहां पे, या उस प्रोडक्ट को वहां उस मार्केट से विड्रॉ करना है, कुछ दूसरा या कुछ कैंपेन चलाना है, कुछ ऑफर्स देने हैं। वो सब डिसीजन डेली चेंज होता रहता है। और ये वाला जो एरिया है, जो यहाँ से हम डेटा उठाते हैं और मसाज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो इस लोग पे काम करते हैं उसको हम डेटा इंजीनियर बोलते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड करते हैं, इसको डेटा इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसमें डेटा क्लिंजिंग भी होता है, डेटा प्रोफाइलिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो डेटा आ गया वेयर हाउस में, अब इससे जो रिपोर्ट बनता है वो कैसे रिपोर्ट जाता है मैनेजमेंट के पास। सर योर फेस इज नॉट इन फ्रेम। ओके, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग यस सर, यस सर। सर थोड़ा इंग्लिश भी यूज कीजिए, लोग कह रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में भी, बहुत ठीक। सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं कि वो साउथ इंडियन है ना, तो प्लीज बोथ लैंग्वेज सर। Okay. Now, okay, we try to use both. Okay, so now we are here that we have stored data in our enterprise data warehouse. हमारा पूरा कंपनी का डेटा है, ऐसा ही नहीं केवल सेल्स एप्लीकेशन का है। सो इट इज अ एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। हमारा डेटा अच्छा क्वालिटी का एक कंसिस्टेंट फॉर्म में आ गया है। अब उसके ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी है। उसके ऊपर रिपोर्टिंग कई तरीके से होती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट चल रहे हैं मार्केट में, उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। वो उसमें हाई क्वालिटी विजुअल्स होते हैं, और उसमें ऑप्शन होता है, आप ड्रिल डाउन करो, उस पर क्लिक करो और नीचे, उसके नीचे जाएगा, उसके नीचे जाएगा। आप नैरो डाउन कर सकते हो प्रॉब्लम कहाँ आपका। अगर ये सेल्स नंबर इतना दिख रहा है तो कैसे आया, किन किन रीजन से आया, रीजन के बाद किन किन स्टेट से आया, स्टेट के बाद किन किन आपके सेल्स सेंटर से आया, सारा बता देगा। सेल्स सेंटर के बाद सेल्स पर्सन के थ्रू है, यहाँ तक आपको डेटा बता देगा। शुरू में आपको हायर लेवल बताएगा, फिर ड्रिल डाउन करके नीचे तक ले जाएगा। अब जैसे ये वाला एक एग्जांपल देख रहे हो आप, इसमें ये निगेटिव फिगर शुरू में ही बता रहा है कि ये सारे लॉस में चल रहे हैं, ये सारे चीज लो। अब इनका एनालिसिस करना है क्यों लॉस में गए, और यहीं से एनालिसिस हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे कुछ फॉर्मूला होते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, जिससे उनको एक नंबर आता है, जो उनको नंबर से उनको पता चल जाता है ये नंबर, ये जो रेशियो आया है, ये जो इंडेक्सेस आया है, वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है या नेगेटिव। 8, 10, 15 केपीआई होते हैं, वो सारे केपीआई के नंबर यहाँ ऊपर में ही डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और ऊपर में आ जाते हैं। उन्हीं से उनको हेल्थ पता चल जाता है, कंपनी का हेल्थ कैसा है, कंपनी कोई डिजास्टर में जा रहा है, कंपनी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कैश,
डेबिट ज्यादा हो रहा है कंपनी के ऊपर, तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर वो नैरो डाउन कर सकते हैं, इसको ड्रिल डाउन करके इंडिविजुअल पे जा सकते हैं। और बहुत तरह के ग्राफ्स हैं, तरह तरह के ग्राफ्स रिपोर्टिंग टूल में आते हैं, दैट कैन मेक यू डू एनालिसिस विथ योर आईज, दैट इज द ब्यूटी। और इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एनालिटिक्स। आपको देख के, ज्यादा क्लिक करने से नहीं, आप रिपोर्ट देख के आपको पता चल गया, आंख से पता चल गया, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट नंबर्स, किसको बोल्ड करना है, किसको क्या करना है, ये अपने आप में एक साइंस है। जो ह्यूमन ब्रेन को, जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट कुछ चीजें होती हैं, देखने से आपको पता चल जाता है। इसमें भी ये साइंस है, कहाँ कैसा, किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा ग्राफ यूज करना चाहिए, कैसा कलर यूज करना चाहिए, क्या उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या न्यूमरेट उसका एक्सेस में क्या होना चाहिए, सारा इसकी अपने अलग एक साइंस है। तो ये, इसको हम विजुअल एनालिटिक्स, ये डैशबोर्ड, ये एक रिपोर्टिंग का तरीका है। तो यहाँ हमने इसके बारे में बात किया, इसको हम लोग एनालिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिकल रिपोर्टिंग। अब इसके आगे हम अब चलते हैं। रफीक साहब, अगर ब्रेक लेने का होगा आप बता दीजिएगा, विल टेक ए ब्रेक। अब हम, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है एडवांस्ड एनालिटिक्स, अब हम आते हैं एडवांस एनालिटिक्स। अब हमने ग्राउंड बनाया, हमने पूरी जर्नी स्टोरी देखी, कहां से हम स्टार्ट किए थे, कहां तक पहुंच गए। अब और क्या, व्हाट नेक्स्ट? So far we have been doing reactive analysis. Something went wrong and we are trying to figure out what went wrong and then take necessary action against them, or so that from here onwards we can make good progress. But that may not be good enough for companies who are running on a daily basis, running huge sales. That may not be good enough. They may, because of certain mistake, then they may lose significant market share. तब उनको क्या चाहिए? They need some kind of advanced analytics, so that उनको competitive edge मिले over their competitors. What they will get with, how they will get this competitive edge? With the prediction. Now we have the data, we know something went wrong, and we are taking actions to rectify that. But what we should do tomorrow so that we make more business than our competitor? What we should do? That is what this advanced analytics is all about. There are various steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data management, हमने देख लिया, we saw that data management. Everything that we have learned so far in half an hour are all relevant, all have built your base to do the advanced analytics. We have written complex ETL, extract transformation load to bring them into a proper shape in your warehouse. Then you have built some reports, visualization, business intelligence reports to do data analytics, simple analytics. Now we are here, model. Now we will be writing some statistical model. That is the knowledge of statistics and mathematics is very essential in advanced analytics, in data science. People who have good knowledge of math or are interested or have some background about statistics, they can explore, because this is where the money lies. People who are writing the statistical algorithm, they are the actual key person. They are the actual scientist. And we will talk about what they do inside the model. We'll talk about that a little later, but they write a lot of statistical modeling there was going on.
machine learning, deep learning, all those are mathematical modeling. So mathematics is a key subject now. Mathematics and statistics is a key subject, not the computer engineer. If you want to do in the field of advanced alert. So people who is good in math and statistics, they should go straight away go to this field. Advanced, then we do some deployment and all those things. What is advanced analytics? Deeper insights, makes prediction, and then generate recommendation. What are the things? We call it data mining. We also call it machine learning. Machine learns itself. We talked about that earlier. We provide some training data to the model, and then model learns itself. Oh, I have to, if I put 10% on the weight on the employee male, and 20% on his education, 30% on his location, then my result is matching. The model learn from the data. That is machine learning. Machine is learning itself. Pattern matching, forecasting, sentiment analysis. People are saying so some movie is launched, and then people are writing about the movie that they saw, and then that affects the market. And there are people who are analyzing this. Social media, whatever people are talking in social media, there are people who are analyzing it and then taking some actions, deriving some insights from it. That is sentiment analysis. Predictive analysis using statistical modeling technique, current and historical data pattern to predict about the future outcome. We are predicting. Remember, it may not be, it is never 100% accurate, but it should be close. It is an ongoing process. It is not like you write a model today and it will, in very first attempt, it will go away as 88% success, 98% success. It doesn't happen like that. You keep fine-tuning your model, keep changing variables, and then sometimes even change the model. You may have used linear regression. Now you want to use some decision trees and see how this affects your outcome. So you have to get the best so that it is closer to your actual. It will be never actual, but it will, if your model training, the best part of this model is training your model. That is machine learning. If your model is trained properly, then it knows if the data comes like this, this will be the future outcome. Now we are here in, okay, we are towards the top of our hour. We'll quickly try to, we are almost closing. Statistical modeling. We talked about all those things. It's just that we have created some diagram here. You give the data, then train the model, and then this is a recursive process. You keep on training and evaluating, then deploy the model, and then keep monitoring it, whether your model is still giving the data in that range. If it is not giving in that range, something went wrong, you redo your model because new data has come. So you may, because the data pattern may keep changing. It may not be what the people spending, people mindset was there 2 years back will be still today. So you need to keep the latest data as well in your training, so that your model knows both variety of data and is able to take action accordingly. This is the big thing that in case of statistics, what you should be looking for: regression. So this is what all variables you have defined for your outcome, how to use those variables to predict the outcome.
That is what regression in statistics. There are a lot of complex algorithms. And then we have deep learning, something kind of how a human brain reacts. Now we are trying to build something in the computer so that the model is nothing but a program or a bot or robot. So like a human person reacts against a situation, against the data, your model, your computer, your bot, your program should be able to react. That is furthermore ahead of this predictive, we go for deep learning, and then something called neural networks. This is again going towards this human nature, how to get the human behavior, human brain like working bots. That is what these days we research and people are doing that. Okay, so what data scientists do? So data scientists find pattern, trends, data set, creates algorithm, uses machine learning techniques to improve, communicate recommendations. And these are some of the technology that is used. This is a language in which you write the model logic. This is R or Python. These are open source. SAS is quite expensive, but is a very widely used software. And then SPSS is from IBM. These are some of the, there are a lot of more, but these are some of the software they are used for modeling. Why these softwares are there? Because these statistical functions, they cannot be run inside the relational database. That was the problem. And they are still cannot be. The closest was Netezza. Netezza from IBM was the closest who could write who could be able to execute some statistical function. But most of them, they are not. So we have to write a separate program that is capable of running statistical functions. These are the languages that are capable. Then we take data from our data warehouse, from the relational, and then run model on top or using that, and then get our predictions. Various different types of model that people are using: decision trees, GBM, random forest. These are random variables that we are talked about. Correlation. These are the topics when you go to the statistics in terms of modeling, you should be looking at. Random variables, correlation coefficient, outliers. We talked about that. We should exclude certain outliers. Something wrong happened and the sales dropped in certain state because of the flood. So that remove that, because that is something natural disaster and we are not expecting flood every year or every month. So that will, let's move it out so that that is not affecting our model to stretch to even accommodate the outliers. Okay, so with this we are coming towards the end of this today's session. We'll do a little recap what all we learned today. We learned data information, OLTP system. We learned about database, RDBMS, some semi-structured data, some unstructured data, ER diagram, data model, enterprise application, different sources of data, enterprise data warehouse, data extraction, transformation, cleansing, ETL, data analytics, analytical reporting, dashboard, advanced analytics, statistical modeling, and data science. These are the topics briefly we discussed about. In case anybody has question, we'll be more than happy to take those questions. Anyone have any doubt, any questions regarding the sessions? Mr. Adityanath, sir, thank you very much for this your valuable this sessions. Anyone have any questions? Then ask. Sir is here. Anyone?
anyone have any questions regarding the sessions? If we don't have, we should. I think, sir, there is no any doubt regarding this session. So we should wind up it now. We will see tomorrow, inshallah, 7:30 p.m. Sir, thank you very much. सर बस थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो दे वांट टू हिंदी, और कुछ लोग ऐसे थे कहते इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, तो ये पूरे सेशन में बड़ा कंफ्यूजन रहा। तो कुछ कह रहे थे कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी होना चाहिए, कुछ कह रहे थे हिंदी में नहीं इंग्लिश में होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली जो डाटा साइंस जो है वो होना तो इंग्लिश में ही चाहिए। और कमेंट आया, इसलिए सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर रिगार्डिंग दिस। लेकिन सर बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा सर सेशन रहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वी गॉट इट, बहुत सारी चीज़ जो हमें जानने को मिली, नई चीज़ें जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज हमने डाटा साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। राशिद सर भी आए थे, लेकिन उनके राशिद सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आए थे सर, उनका उन्होंने भी बहुत सारी चीज़, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, कहीं और मीटिंग थी, इसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाए। उनका मैसेज आया था कि मैं आई वांट टू अटेंड द इंटायर सेशन बट आई एम बिजी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। लेकिन सर आपका जो बताने का, प्रेजेंटेशन का जो अंदाज़ है, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हमारे सेशन में सर बहुत लोग जुड़े, और ये वो ऐसे लोग थे जो बेसिकली डाटा साइंस के बारे में कुछ लर्न करना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही आ गए और सर्टिफिकेट ले लिया और गया, लेकिन ऐसे लोग थे जो जानना चाहते हैं बेसिकली कि डाटा साइंस है क्या। क्योंकि आज जो मतलब अपॉर्चुनिटी डाटा साइंस के फील्ड में है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एमएससी डाटा साइंस, बीएससी डाटा साइंस को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि पता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना इम्पोर्टेंस है इस तो इसलिए सर हमने ये सेशन रखा था, डाटा साइंस अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर। तो आज सर हम लोगों ने डाटा साइंस के बारे में सीखा, और कल हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड फीचर्स में क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। और राशिद सर थैंक यू वेरी मच सर, आपका मतलब योर कंट्रीब्यूशन इज बहुत ही ज़्यादा सर, आपका कंट्रीब्यूशन है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस सेशन, इंटायर सेशन। तो सर आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका गाइडेंस है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उड़ा रहे हैं उसका, चाहे वो पहले का हो चाहे वो अब का हो, जितने भी लेक्चर हुए। और आपका कॉपरेशन सर, वी सैल्यूट योर कॉपरेशन फॉर आवर मतलब भारत डिजिटल एकेडमी। आप ही की वजह से सर आदित्यनाथ सर इस सेशन से जुड़े, और बहुत ही ज़्यादा कुछ बारीकी चीज़, उनका जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने बहुत ही जितने भी पार्टिसिपेंट थे तो बहुत अच्छे कमेंट हैं इसमें, बहुत अच्छा लोगों ने बताया है इसको। ये तो रफीक सर आदित्य सर थैंक यू वेरी मच। तो जस्ट राशिद सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ राशिद सर, योर वॉइस इज नॉट अच्छा ओके नाउ एम आई ऑडिबल? राशिद सर योर वॉइस इज नॉट, my voice is not reaching you? No, Yes sir. Okay, is it not audible? Audible. Yes sir, yes Okay. sir, yes. So if participants have questions for today's session that Mr. Aditya Nath has delivered, right, or if there are confusions, we can take up those questions tomorrow in the session when we start the session tomorrow. Please note down your question. You can note down your questions before tomorrow's session we start. We'll take the questions first before going to the next topic. I think we should और एक इंफॉर्मेशन और है कि टुमारो हमारे साथ एक बहुत ही मतलब एक्सपर्ट फ्रॉम हिटाची
स्वप्निल जी जुड़ेंगे, वो भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे एग्जैक्टली हाउ टू डाटा साइंस इज वर्क इन एंटायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी जुड़ेंगे। तो फिर भी सर आदित्य सर, तो एनीवन एनीथिंग एल्स सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप प्लीज? नहीं, मैं कल ध्यान रखूंगा। टुमारो आई विल बैलेंस लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड और मैं आई विल लाइक सम मोर क्वेश्चंस, ताकि आपके अंदर आप कितना समझे। अगर देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन, so please do not shy in asking questions. Everyone, we have all went through this journey.